Okay. So one last time, is my voice audible to everybody? Yeah, write in the chat box. Is my voice audible to everybody? Okay, great. So let me get started with, a very important type of tense is what we call as present perfect continuous tense. So I'm not going to go into or delve into details of all the tenses, but I have seen incorrect usage of this tense, or rather, this tense is not utilized, and the other tense is utilized in place where this tense should have been utilized. So what do you mean by past perfect continuous tense? As you all know that, there are four types of past tenses: simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. So the past perfect continuous, which is also known as the past perfect progressive tense, different books call this tense as, name this tense in different ways. It shows that action that has started in the past continued up until another time in the past. ऐसी कोई एक्शन जो पास्ट में चालू हुई है और पास्ट में ही कुछ किसी समय तक चालू रही है. So let me tell you that, it is not the action that was basically that got completed. It is not the action, that completed in the past, but ये ऐसी एक्शन है जो पास्ट में चालू हुई है और कुछ समय तक चालू ही है. So this is where we are going to utilize past perfect continuous tense. The format of this tense is subject plus had been plus verb in ing form. It is very, very important to understand that for all continuous tenses, whether it is present perfect continuous, past perfect continuous, or future perfect continuous, or rather any continuous tense, वर्ब के पीछे ing लगेगा ही लगेगा. So यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो ये है: subject plus had been plus verb in ing form. Now, I wish to know from you people, what is the basic difference between past continuous and past perfect continuous? Can anyone tell me the difference between past continuous and past perfect continuous? Yes, I want answer from any one of you. What is exactly is the basic difference between past continuous and past perfect continuous? Can anyone help me out? I'm looking for queries. I'm looking for, answers from you people. Yes, can you help me out? What is the difference between past continuous and past perfect continuous? Any guess would be fine. So let me first of all explain you this. What do you mean by past perfect, continuous? So you can see over here a small diagram is given. An action that got started in the past, पास्ट में ही किसी समय तक चालू रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने पास्ट में क्रिकेट खेलना चालू किया था और 2 घंटों तक मैं क्रिकेट खेलता रहा. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. So we use the past perfect continuous to show that something started in the past and continued up until another time in the past. For example, you can say for 5 minutes or for 2 weeks, etc. are both durations which can be used with the past perfect continuous. So let me share an example for you. I felt really tired because I had been driving for 5 hours. Let me give you a second example. She had been waiting for 2 hours when the doctor finally arrived. Remember the format of the tense? It is subject plus had been plus verb in ing form. तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो subject है I followed by had been. Verb जो drive है, it is in ing form, that is driving. Similarly, in the second sentence, she had been waiting for 2 hours when the doctor finally arrived. The ground was wet because it had been raining since an hour. Fourth example, when he quit his job at the factory, he had been working there for 15 years. Now, I hope now the past perfect continuous is clear. So now can you help me out the difference between, or understanding the difference between past continuous and past perfect continuous? Yes, can any one of you help me out to understand, to explain me the difference between past perfect? Deepak, you are giving me the format. Deepak is saying past में ऐसा होगा कि verb plus ing form होगा. That is true. Technically, you are right. If I talk about simple, past continuous, then it would be, verb, subject plus verb in ing form plus was or were plus verb in ing form. For example, it was raining. और ये अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आई हैड बीन ड्राइविंग के बदले हो जाएगा आई वॉज ड्राइविंग. और अगर यहाँ पे बात करूँ सी हैड बीन वेटिंग, सी वॉज वेटिंग. इट वॉज रेनिंग, सी वॉज वर्किंग. सो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस.
बट वेयर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो नियम ये कहता है, बिल्कुल गौर से सुने इसे, कि व्हेन यू वांट टू मेंशन द ड्यूरेशन देन यू कैन नॉट यूटिलाइज सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 5 आवर्स, ये मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कह सकता हूँ, but I cannot say or utilize a sentence like this, I felt really tired because I was driving for 5 hours. So remember one thing students, whenever you are utilizing duration, जैसे कि सारे sentences में अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो 5 घंटे, दूसरे में 2 घंटे, तीसरे में 1 घंटा और चौथे में 15 साल, ये चारों चार सेंटेंसेस में यू कैन सी दैट आई हैव यूटिलाइज टाइम। तो अगर टाइम का इस्तेमाल होता है, पास्ट में ही भले क्यों ना हो, यू ऑलवेज नीड टू यूटिलाइज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। यही चीज लागू होती है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट आई मीन सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फर्ज कीजिए कि अगर मैं डॉक्टर की वेट कर रहा हूं 2 घंटों से, तो मैं ये कहूंगा अगर कि आई एम वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 2 आवर्स, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, बिकॉज आई एम यूटिलाइजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक चीज का याद रहे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर ड्यूरेशन की बात आती है तो आपको इसी 3 टेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई रिपीट, यू कैन नॉट से आई वॉज ड्राइविंग फॉर 5 आवर्स। अगर आप बोलते हो आई वॉज ड्राइविंग तब तक ठीक है, लेकिन व्हेन द ड्यूरेशन इज एडेड, it is always going to be past perfect continuous. I hope the things are clear to you all. Write in the chat box, is it clear everybody? फॉर्मेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ करते हो। सो व्हेन यू आर स्पीकिंग माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप टेस्ट देते हो, आप जानते हो कि आईएलटीएस में डायरेक्टली ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं होते, बट व्हेन बिकॉज आप जानते हो कि स्पीकिंग और राइटिंग में ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का महत्व होता है, इसी के कारण इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस टाइप ऑफ स्मॉल थिंग्स आर चेक्ड बाय द एग्जामिनर whether you are utilizing the tense in the right way or not. So I hope the things are clear to you कि जब भी आप ड्यूरेशन की बात करते हैं तो प्लीज कृपया परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पे हमने पास्ट की बात की है, लेकिन नियम जो है वो सब जगह लागू होता है। ड्यूरेशन मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें एक छोटी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर ड्यूरेशन, आपको ड्यूरेशन बताना है टाइम का, तो फॉर का इस्तेमाल कीजिए, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना है तो सिंस का इस्तेमाल कीजिए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर मैं बोलता हूं मैं डॉक्टर की 2 घंटों से वेट कर रहा हूं, मैं 4 बजे पहुंचा लेकिन 6 बजे तक डॉक्टर साहब नहीं आए, सो मैं 2 तरीकों से इसको बोल सकता हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर और आई हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 2 आवर्स। तो अगर ड्यूरेशन 2 घंटों का ड्यूरेशन है तो फॉर का इस्तेमाल कीजिए, और अगर स्टार्टिंग टाइम है 4 बजे से मैं वेट कर रहा था, तो आप कह सकते हो आई हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर सिंस 4 PM। सो प्लीज रिमेंबर और अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर वो टोटल ड्यूरेशन जो आप इस मतलब आपने जितने टाइम तक किया उसका उनका वेट किया उसके लिए इस्तेमाल होगा, और बिगिनिंग से है तो आप सिंस का इस्तेमाल करोगे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते आई हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 4 PM, तो ये गलत हो जाएगा। I hope the things are clear. Let us have a small exercise. I want you people to complete sentences 1 to 5 with past perfect continuous. जो वर्ब का इस्तेमाल करना है वो अंदर दिया हुआ है। वर्क, पहले सेंटेंस में वर्क, वर्ब वर्क है, दूसरे में स्लीप, थर्ड में लाइव लीव, वर्क एंड ईट। So I'm giving you 1 minute. Please try to utilize past perfect continuous correctly. आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आई कैन चेक इट आउट, आई कैन सी द आंसर्स आर probably right. Bhumika has given me the right answer. Aditya has also given me the right answer. I want everybody to write. इसकी इस्तेमाल प्रैक्टिस करोगे तो ही फायदा होगा, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ही फायदा। भूमिका आपने दूसरे का गलत जवाब दिया है, आपने सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर दिया है। No, 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 yes, the answer is wrong. आपको had been, what is the format of past perfect continuous students?
What is the format of it? Is subject plus had been plus verb in ing form. इस चीज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. I repeat, subject plus had been plus verb in ing form. So it is very very important कि ये चीज छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें आप. Okay, so let me check out with the answers now. I believe that each and every one of you must have attempted everything. एक चीज का याद रहे कि सारे के सारे सेंटेंसेस जो है उसमें ड्यूरेशन की बात है. अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो ऑल डे, 10 आवर्स, 3 years, 6 months, ऑल डे, तो पांचों पांच सेंटेंस में ड्यूरेशन क्योंकि इस्तेमाल होता है, उसी के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं. Is it getting clear? So let me check out the answers. Last, I'm last 5 seconds. Okay, so let me check the answers. ये रहे सारे आंसर्स. पहले का आंसर होगा आई हैड बीन वर्किंग, दूसरे का सी हैड बीन स्लीपिंग, तीसरे का दे हैड बीन लिविंग, फोर्थ का आंसर यू हैड बीन वर्किंग, और फिफ्थ का आंसर वी हैड बीन ईटिंग. अब यही चीज अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी तो हैव या हैज हो जाएगा, लेकिन पास्ट में सिर्फ हैड का इस्तेमाल होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में. प्रेजेंट टेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आई हैव बीन वर्किंग, सी हैज बीन स्लीपिंग, दे हैव बीन लिविंग, यू हैव बीन वर्किंग, एंड वी हैव बीन ईटिंग. तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में याद रहे हैज या हैव डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, लेकिन पास्ट में सिर्फ और सिर्फ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैड का इस्तेमाल होता है. आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू. Shall we now go ahead with the next session? I hope these things are clear. Okay, so let me go ahead with the थोड़ा सा एडवांस लेते हैं हम लोग. Okay, can you see a new slide, students? Can you see a new slide? ये मैं चाहूंगा आप लोग अपनी नोटबुक और पेंसिल निकालें और उसमें उसमें प्रॉब्ली प्लीज जॉट द पॉइंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज. आपको सबको पता है कि आपको रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना होता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. और इसी ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये IELTS ही कह रहा है कि आपके ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इफ यू लुक एट 9 बेंड्स पैरामीटर, जो आपके सामने मेरा कर्सर घूम रहा है, जो आप देख सकते हो 9, उसमें लिखा है कि यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स विद फुल फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्यूरेसी, रेयर माइनर एरर्स अकर ओनली एज स्लिप्स. तो आज का जो सेशन है वो 9 बैंड्स के लिए है. तो अगर आपको 6, 7 और 8 बैंड से, अगर 6 बैंड चाहिए तो आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. लुक एट द कर्सर, द पोजीशन ऑफ द कर्सर. If you want to get 7 bands, you need to utilize a variety of complex structures. The usage of simple structures will reduce. If you want to get 8 bands, you need to utilize a wide range of structures. तो ये जो सेशन हमारा है is basically for getting 8 or 9 bands. So I want you people to write down. I'm going to give you 10 types of sentences, 10 phrases which will help you to create a complex and a big sentence. ओके तो ये चीज याद रहे. इसके पहले मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा आपको. हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, complex sentence, and compound complex sentence. On some other day I will take what these sentences mean, but as of now I'm not going to discuss these 4 types of sentences. I'm going to go into the different types of sentence structures जो आप स्पीकिंग में और रीडिंग राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो. तो पहला है when. So I want you people to just write down in your answer, notebook when. तो अगर when का इस्तेमाल करोगे तो कैसे सेंटेंस बन सकता है अच्छा सा. कैन यू सी ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. कैन यू सी when, एवरीबॉडी? कैन यू सी when? ओके ग्रेट. सो when से कैसे इस्तेमाल हो सकता है, तो ये चीज याद रखिए अपने नोटबुक में कृपया. पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से भी आगे का सेशन है. तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जॉट डाउन कीजिए. तो पहला है when. तो अगर आप कोई भी सेंटेंस when से बनाना चाहते हो तो नाउ लेट मी हेल्प हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट रीडिंग द सेंटेंस. कैन एनीवन हेल्प मी आउट रीडिंग? यस आदित्य. हाय आदित्य. हेलो सर.
Yeah, there is a disturbance coming from behind. Yeah, can you read? Yeah, just a minute. Yeah, who else can help me out? It appears Aditya, can you yeah, Bhumika may help me out. Yeah, Bhumika, can you help me out? Aditya, you can mute yourself. Yeah. Yes, sir. Yeah, Bhumika, can you read the sentence? Yeah, by using use when, there is the example, when a language dies out, a whole way of life disappears with it. ओके सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि व्हेन का इस्तेमाल करके आप कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। तो जब आप ऐसे लिखते हो, जब आप बोलते हो स्पीकिंग में, तो ये सारे फ्रेजेस का याद रहे कि व्हेन अ लैंग्वेज डाइज आउट, कोई भी अगर लैंग्वेज मर जाती है तो उसके साथ मर जाता है एक पूरी जिंदगी जीने का एक तरीका भी उसके साथ मर जाता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द सेंटेंस ओवर हियर, बट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ यू कैन यूटिलाइज और हाउ यू कैन मेक अ सेंटेंस बाय यूटिलाइजिंग व्हेन। ओके, सो लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला है व्हेन, दूसरा है व्हाइल। सो वी आर बेसिकली यूटिलाइजिंग व्हाइल। कैन यू रीड, भूमिका? Yes. While some students drop out after a few years of studying, others finish academic courses with poor degrees. सो यू कैन सी हाउ वी हैव यूटिलाइज्ड व्हाइल। याद रहिए व्हेन और व्हाइल से बनता ही ऐसे, अगर आप कोई सेंटेंस व्हाइल से स्टार्ट करते हो तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनेगा और बीच में कॉमा भी आएगा। अगर आप इसको गौर से देखो तो देखो कितने वर्ड्स का सेंटेंस बना हुआ है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तकरीबन 18 से 19 वर्ड्स का ये सेंटेंस बना हुआ है। So you are showing to the examiner your ability to write a bigger sentence which will help you to get a score about 7.5 ends. पहला भूमिका कौन सा था? Can you recall? When, Second is going to be while. Okay. while. तीसरा, read. Third one is resulting in an increase or a decrease in plus the number of. Yeah, so you can always make a sentence by utilizing this phrase, resulting in an increase or a decrease in the number of this. So can you read the example? Yeah. Many people in the countryside migrate into big cities, resulting in an increase in the demands for accommodation, food, and services in the urban areas. Okay, so here you can see that we have made a very big sentence by utilizing resulting in an increase. इसके बदले आप resulting in a decrease भी कह सकते हो। यहाँ पे एक चीज का याद रखें, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज है, वी हैव यूटिलाइज आर्टिकल एन। आपको सबको पता है कि आर्टिकल ए ई आई ओ यू के आगे एन लगता है, लेकिन अगर डिक्रीज है तो अ लग जाएगा। तो ये चीज का याद रहे। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, मेनी पीपल इन द कंट्री साइड माइग्रेट इनटू बिग सिटीज फुल स्टॉप, दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज। तो ये दो सेंटेंस बन जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है, लेकिन अगर आपको एक ही सेंटेंस बड़ा बनाना है तो यू कैन ऑलवेज यूटिलाइजिंग रिजल्ट आईएनजी फॉर्म में लगाओगे तो एक बड़ा सेंटेंस बन जाएगा। आप ऐसा भी लगा सकते हो, दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज, दो सेंटेंसेस बन जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको कितने सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन बेहतरीन ऑप्शन है जिससे आप एक बहुत अच्छा बड़ा सेंटेंस बना सकते हो। 4, Giving rise of something. गिविंग राइज टू समथिंग। Okay. ओके, प्लीज गो अहेड। Example, advertisements give people more choices on what they want to buy, giving rise to the consumer society. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो गिविंग राइज। सो गिविंग राइज इसको भी आप दो सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, दिस गिव्स राइज टू द कंज्यूमर सोसाइटी। लेकिन आईएनजी का इस्तेमाल करके एक बड़ा अच्छा सा लंबा सेंटेंस बना दिया। तो चौथा है गिविंग राइज टू समथिंग। ओके, फोर्थ, फिफ्थ। Fifth is by doing something. ओके, सो दिस इज बाय डूइंग समथिंग, यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज दिस। चलिए, By spending money to protect minority languages, governments can also preserve traditions, customs, and behaviors. तो गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो प्रिजर्व ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड बिहेवियर्स। यहाँ पे याद रहे बाय स्पेंडिंग मनी के बदले बाय बाय कंप्लीटिंग, बाय रेस्ट्रिक्टिंग। तो आप कोई भी डूइंग समथिंग का मतलब स्पेंडिंग के बदले कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे फोकस है कोई भी सेंटेंस बाय से स्टार्ट करना है। सो बाय स्पेंडिंग मनी, बाय रेस्ट्रिक्टिंग पीपल और बाय एनकरेजिंग पीपल to use public transportation system, government can save fuel। तो देखो आप कैसे मैंने बड़ा सेंटेंस बनाया। सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो आप बाय से, बाय स्पेंडिंग मनी, बाय रेस्ट्रिक्टिंग, बाय अवेयरिंग पीपल, बाय एनकरेजिंग पीपल, बाय मोटिवेटिंग पीपल। ओके, आगे। And this will. 6 जो है एंड दिस विल, इसका इस्तेमाल कैसे होगा?
the use of private cars is increasing in Hanoi, and this will put a strain on its infrastructure. वेरी गुड. सो यहाँ पे याद रखना है कि एंड का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड का इस्तेमाल करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किया दिस विल का, एंड दिस विल. सो यू कैन, द यूज ऑफ प्राइवेट कार्स इज इंक्रीजिंग इन हनोई. और बाद में अगर मैं दूसरा सेंटेंस लगाता तो ऐसा होता, फुल स्टॉप, दिस विल पुट अ स्ट्रेन ऑन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. सोचने वाली बात यहाँ पे बात ये है कि अगर आपने जो अभी मैंने बताया वैसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया होता तो ये आपका 6, 6.5, 7 बैंड, 6, 6.5 बैंड तक का सेंटेंस स्ट्रक्चर था. सिर्फ आपने एंड दिस विल लगा दिया तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो बन गया, मैच्योर सेंटेंस बन गया. इससे आपके बैंड ज्यादा मिल सकते हैं. सो आई रिपीट, दिस सेंटेंस कुड हैव बीन दिस, द यूज ऑफ प्राइवेट कार्स इज इंक्रीजिंग इन हनोई, फुल स्टॉप, दिस विल पुट अ स्ट्रेन ऑन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. उसी के बदले हमने कर दिया एंड दिस विल पुट अ स्ट्रेन ऑन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. 7th. Instead of, Yeah, example, instead of driving cars, people should use public transport. वेरी गुड, वेरी नाइस सेंटेंस. सिर्फ आपको याद रखना है कि इंस्टेड ऑफ से मैं स्टार्ट करूं. सो इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग कार्स पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ये सारे जो सेंटेंसेस है ये आप जब बॉडी पैराग्राफ लिखते हो ऐसे के, उसमें सेकंड सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं. So you know, first sentence you have written a simple sentence and then you can utilize this type of complex sentences. Okay, 8th. This allows or urges or encourages. मैं चाहूंगा ये तीनों वर्ड्स को आप बिल्कुल याद रखें. दिस अलाउस, अर्जिस और एनकरेजेस. ग्रामेटिकल यहाँ पे याद रहे, दिस जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो देखे आप जो तीन वर्ड्स है उसमें मैंने एस लगाया हुआ है. दिस अलाउस, दिस अर्जिस, दिस एनकरेजेस. याद रहे, दिस अलाउ, दिस अर्ज, दिस एनकरेज ऐसा न हो जाए, वरना ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते ऐसा लगेगा, and you are grammatically incorrect. So whenever you are starting a sentence with this this, this, it should always be followed by a verb with s. So this allows, this urges, this encourages. Please go ahead, example padhiye. The utilization of cheap labor helps companies to reduce production costs. This encourages business expansion. Very nice sentence. This encourages business expansion. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, the utilization of cheap labor help companies to reduce production cost, comma, and this encourages business expansion. तो दो सेंटेंस बन गए, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दिस एनकरेजेस जो वर्ड्स है, अर्जिस, अलाउज, ये बहुत अच्छे वर्ड्स है, मैच्योर वर्ड्स है जो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हो. 9th, compared to those who, example, compared to those who hold high school qualifications, university graduates often have more employment opportunities. This is a very nice sentence that you can utilize when you want to give an example. Example अगर आप देना चाहते हो तो, क्योंकि example में ऐसा होता है कि ये करना है, तो आप जब example देते हो तो compared से start कीजिए. So compared to those who hold high degrees, you know, ये बहुत अच्छे examples है. Say for example, compared to those who hold high school qualifications, university graduates often have more employment opportunities. तो इससे क्या होगा, कभी भी आप कंपैरिजन करना चाहते हो, कंपेयर टू दोज हु हैव नॉट टेकन a booster dose, I mean compared to those who have taken booster dose, people usually, there are more chances of for people to go for hospitalization if they have not taken a booster dose. तो आपने क्या किया, दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बारे में, दो इवेंट्स के बीच में कंपैरिजन किया. तो आप स्टार्ट ही कैसे कर सकते हो, कंपेयर टू दोज. बहुत मैच्योर स्टेटमेंट है. I want you people to utilize this. Shavani, this urges people, urges मतलब किसी को प्रेशराइज करना, किसी को विनम्रता से प्रेशराइज करना. तो आप जहां पे मोटिवेट का इस्तेमाल करते हो वहां पे आप urges का भी इस्तेमाल कर सकते हो. Okay, then comes the 10th one. If subject plus verb. So ये conditional sentences है. These are all conditional sentences. जहां पे conditional sentences बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसका पूरा अलग लेक्चर लूंगा जहां पे फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एंड फोर्थ कंडीशनल. काफी कॉम्प्लिकेटेड है वो, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर आप इफ से स्टार्ट करते हो सेंटेंस तो ये ऐसे सेंटेंस बना सकते हो. Example, if air travel is restricted, people would opt for other means of transport such as buses and cars. So ये जो है ये 10वां है, इफ से स्टार्ट कीजिए सेंटेंस.
if is a conditional statement. agar if government government invest in public transportation system, people will opt for public transportation system instead of buses and cars. तो एक बेहतरीन सेंटेंस बना है. ये सारे जो मैंने वर्ड सेंटेंसेस बताए उसमें मोर और लेस कॉमा का इस्तेमाल होता है, और जहां पे कॉमा का इस्तेमाल होता है एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस बन के आता है, और इसमें ये फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है, तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा. तो मैं वापस लेट अस हैव अ स्मॉल रिकैप स्टूडेंट्स, एक छोटा सा रिकैप करते हैं. पहला जो था वो है कैन एनीवन हेल्प मी आउट. अगर किसी ने लिखा हुआ है तो ही बेसिकली कैन राइट इन द चैट बॉक्स. द फर्स्ट वन वाज व्हेन, दूसरा था व्हाट वाज द सेकंड वन, व्हाइल. while. या इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों में से कितने लोग ये लिखते हैं, क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग तो आपको मिलता है, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए वापस टाइम निकालना शायद डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये दूसरा है व्हाइल. तीसरा है रिजल्टिंग इन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ समथिंग. फोर्थ इज गिविंग राइज टू समथिंग. फिफ्थ इज बाय डूइंग समथिंग. सिक्स्थ इज एंड दिस विल. सेवंथ इज इंस्टेड ऑफ. एथ इज दिस अलाउज, अर्जिस वगैरह वगैरह जो थे वो. एंड फाइनली नाइन्थ है कंपेयर टू. बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन के आता है कंपेयर टू से स्टार्ट करते हैं तो. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो आपके स्क्रीन के सामने है, इट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ. सो मैं चाहूंगा ये सारे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है इसका इस्तेमाल कीजिए. इट विल बी अ फैंटास्टिक वे ऑफ writing a very good sentence. Okay, I hope you enjoyed this session. Let me go ahead with the listening session today. Yeah, understood? दोनों clear हो गए? Perfect, past perfect, continuous or types of sentences. Everybody write in the chat box. Okay. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, let us go for a new share. अब वापस listening की practice करते हैं, बहुत मजा आएगा. Even if you are doing the listening for the very first time, you will still enjoy this. Let us have a small session of listening. So let me see. Yeah, आपके सामने नया screen आ गया. अब मैं चाहूंगा कि आज ये पहले से start करते. We are going to take different types of sentence. I mean different types of questions in listening. तो आप आंसर लिखना चालू कर दीजिए. पहला है form completion. The first one is form completion. Write in your answer sheet 1 to 7. When you are done with writing 1 to 7, let me know so that I can start the listening. Okay, great. Is it done, everybody? Okay, Richa, you can always call me tomorrow. I'll give you I'll ask somebody to take your speaking, or else I'll take the speaking. Don't worry, Richa. Okay. Okay, so let us get started. Let us get started. Okay, let me see first of all whether you're able to listen to the voice. Yeah, can you listen to the voice, everybody? Can you listen to the voice? Yeah, so I have said, yeah. ध्रुव आपको सुनाई देगा. मातंगी, you can, yeah, no. नहीं, अभी नहीं है, लेकिन अभी अब. Can you see? Can you listen, everybody? Okay. Let me see. Yeah, did you listen to the voice, everybody? Did you listen to the voice? मैंने अभी बजाया. No? How come? Okay, let me see. Yeah, is the voice audible now?
That's very surprising. Okay, let me see. Let me do it. Let me do it. Let me do it. Just a minute. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's MK. Yeah, audible? Okay, very good. That's great. Let me see. Yeah, is it audible now? Is it audible now? Just a minute. Yeah, audible everybody? I can see a lot of yes coming. Is it audible now? That's very surprising. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Yeah, it is fine now. Okay, so let us get started now. So let us get started. Overseas. Good morning. Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's Mkere. So what is the answer of first one? What's the answer of first one? MKERE. I was just asking because I wanted to know whether you are able to listen or not. Okay, great. So let us complete 1 to 7 first. Is that M for mother? Yes. Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya. That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that Westall? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right. And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 meters long, Right. 0.75 meters wide, Okay. and it's 0.5 meters high or deep. Great. So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes. Okay.
and there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200. So I'd put down £1,700. Okay, is it You done? will hear a telephone call. Yeah, is it done, everybody? Is it done? I want the answers from each and every one of you. What's the answer from 1 to 8? Okay, so what is the answer of 1 to 8? So first thing first, मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि कैसे आंसर को लिखा जाए. I would always want to make a note of that. Form completion is one of the most easiest part of IELTS listening. इसको हमें मिस नहीं करना है. First thing first. ये पहला मॉड्यूल है, पहला सेक्शन. ज्यादातर केस में फॉर्म कंप्लीशन कम्स इन द फर्स्ट सेक्शन एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दैट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे आंसर्स आप कैपिटल्स में लिखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट ऑल द आंसर्स इन कैपिटल्स. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आंसर्स को कैसे लिखा जाए. सो आई वुड राइट पुट द आंसर्स ओवर हियर. मैं आपके सामने आंसर्स रख रहा हूँ यहाँ पे और मैं चाहूंगा ये सारे आंसर्स आप वापस चेक करें. आई वॉन्ट यू पीपल टू गो थ्रू द आंसर्स एंड सी वेयर यू हैव कमिटेड द मिस्टेक. सो दिस आर योर आंसर स्टूडेंट्स. ये पहले मेरे जो आपके सामने स्क्रीन में है वो सारे आंसर्स को आप चेक कीजिए. पहला है एम की ERE, सेकंड इज वेस्टेल, थर्ड इज BS8 9PU, फोर्थ इज 0.75 मीटर्स, फिफ्थ इज 0.5 मीटर्स, 6 और 7 उन्होंने ऐसा बोला था कि बुक्स है और शायद टॉयज भी है. और 8 में अगर आपको याद होगा कि $1500 पहला बोला था. And then they also spoke about $200 more. So total is going to be $1,700. But here I wish to tell you one very important thing. सबसे बड़ी important चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इसको लिखा कैसे जाए. तो पहली बात, ये सारे आंसर्स को आप कैपिटल्स में लिख सकते हो, मैंने पहले भी बताया था. जो फोर्थ है उसमें आप जरा गौर कीजिए कि ये जो है यहाँ पे अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है वर्ड्स इन ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल, दे आर करेक्ट बट नॉट नेसेसरी, अल्टरनेटिव आंसर्स आर सेपरेटेड बाय स्लैश. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 0.75 मीटर है. मीटर में पीछे एस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. बीच में जैसे कि श्रवणी बीच में स्पेस नहीं होगी तो चलेगा, इट्स फाइन. यू डोंट नीड टू हैव अ स्पेस इन BS8 9PU. आपने बिल्कुल क्लोज लिखा है तो भी चलेगा. लेकिन यहाँ पे ये चीज का याद रहे कि ये जो ब्रैकेट्स में है दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर नॉट कंपल्सरी, दे आर करेक्ट बट नॉट नेसेसरी. मतलब अगर आपने 0.5 m लिखा है तो भी चलेगा, 0.5 मीटर लिखा है तो भी चलेगा और 0.5 मीटर्स लिखा है तो भी चलेगा. आपने अगर 0.5 मीटर्स हाई लिखा है तो भी चलेगा, 0.5 मीटर्स डीप लिखा है तो भी चलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज को जरा गौर करें आप. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि 6th और 7th में बॉयज बुक्स और टॉयज है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बाद में क्लिक होता है कि आंसर सही क्या है. तो अगर आपने 6th में आपने टॉयज लिख दिया है और बाद में क्लिक हुआ कि बुक्स है, जो आपने 7th में लिखा, कोई भी ऑर्डर में होगा तो चलेगा क्योंकि एक ही ग्रुप का है. और 8 में है 1700, उसमें बीच में ब्रैकेट कॉमा करने की जरूरत नहीं है, लिखा है तो ठीक है, बट देयर इज नो कंपल्सन टू गो फॉर ए कॉमा. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सेशन. Okay, so this is multiple choice questions. Let us get started. Okay, right. Now, obviously, insurance is an important thing to consider, and our companies are able. Yeah, is the voice audible once again? Okay. To offer very good rates in a number of different Okay, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके सामने है, मैं चाहूंगा अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला काम करना है सारे क्वेश्चन और ऑप्शंस दोनों को पढ़ लो. You cannot get answers of multiple choice questions right unless and until you have read the question and the options before you start listening. आपने अगर ऐसा सोचा कि मैं लिसनिंग करता जाऊंगा पढ़ता जाऊंगा तो ये नहीं होगा आपसे. तो आपने क्या करना है, whenever you encounter multiple choice questions, probably one of the most toughest type of questions in IELTS is listening. तो मैं क्या करता, पहले 9 types of insurance chosen, A economy, B standard, C premium पहले से ही रीड कर लेता. Customer wants goods delivered to port, home and depot, ये पहले रीड करना बहुत जरूरी है. अब let us see, let us try to get the answers. क्या आंसर है?
all-inclusive packages. Sorry, could you explain a bit more? Yes, sorry. There's really three rates according to quality of insurance cover. There's the highest comprehensive cover, which is premium rate. Then there's standard rate, and then there's economy rate. That one will only cover the cost of the contents second hand. Oh, I've been stung before with economy insurance, so I'll go for the highest. Mm-hmm. And can I just check, would you want home delivery or to a local depot, or would you want to pick it up at the nearest port? The port would be fine. I've got transport that end. Fine. Okay, so what is the answer of 9th and 10th? Write in the chat box what's the answer of 9th and 10th. अगर आपको याद होगा तो उन्होंने ऐसा कहा था कि सबसे अच्छा जो है वो प्रीमियम वाला है, फिर स्टैंडर्ड है और इकोनॉमी है. सारी की सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही वांट्स टू गो फॉर प्रीमियम. प्रीमियम में जाना चाहेगा वो, क्योंकि उसने ऐसा बोला कि इकोनॉमी वो पहले से लेके पछता चुका है. ही इज ऑलरेडी स्टक अप विथ इकोनॉमी बिफोर, so he would not want to go for economy. So answer of 9th is going to be C. और 10th में उसने ऐसा बताया कि आंसर इज गोइंग टू बी A. So answer of 10th is वो पोर्ट में चाहता है क्योंकि पोर्ट से वो अपनी गाड़ी से उठा लेगा. Okay, so answer of 9th and 10th is going to be C and A. Okay, so let us go for the third one. एक तीसरा और करते हैं. This is yeah, इसको हम कहेंगे short answer questions. Now I want somebody to read. Who is going to read the question? Can anyone help me out reading this? ये रीड करना जरूरी है. एक या रीचा विल हेल्प मी आउट. चलो. Yeah, Richa, can you read? Yes, sir. What is Question 11 to 16. what is this type of question known as? These are short answer questions. तो यहाँ पे याद रहे कि because this is, यहाँ पे ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है. तो अगर आप लगते हो तो ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपकी समरी होती तो ग्रामर इंपॉर्टेंट था. नोट कंप्लीशन होती तो ग्रामर इंपॉर्टेंट था. प्लीज रीड. Write no more than 3 words and or a number for each answer. First, what 2 factors can make social contact in a foreign country difficult? Okay, so which 2 factors, जैसे कि दो, पहले सोचो इसको. You don't need to only read the question, you also need to understand the question. कौन से 2 ऐसे factors है जो foreign country में social contact बनाने से हमें difficulty लाएंगे. Okay, then Which type of community group does the speaker give example of? okay, Theater, dash and dash. very good. And last one. Last one, in which 2 places can information about community activities be found? So you are supposed to give answer. 2 answer आपको देने हैं. Understood? Okay, so can you help me out, Richa? What do you got exams in the near future? So can you tell me what do you mean by this instruction? Write no more than 3 words and or a number. इसका मतलब क्या हुआ? Either I have to write the answer in 3 words and number, or I have to write the answer. It means there are 5 ways to write the answer. There are पहला, only 3 numbers or 3 words. There can be 2 words only. There can be 1 word only. very good. Then after there can be 3 words or a number, or it can be a number only, or it can be 2 words or a number, 1 Okay. word or a number. Okay, very good. Very nice interpretation. इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है. मतलब ये मैक्सिमम है. तो पहले मैं तो इसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहूंगा कि 3 वर्ड्स है वो सबसे ज्यादा है तो 2 या 1 वर्ड तो लिख ही सकते हो आप. लेकिन ये जो बीच में इसके पीछे दिया हुआ है एंड और ये समझना जरूरी है. इसका मतलब सबसे ज्यादा आप 3 वर्ड्स एंड अ नंबर और एक नंबर भी लिख सकते हो. मतलब टोटल 4 वर्ड्स आएंगे. एक तो 3 वर्ड्स और एक नंबर, या तो सिर्फ आप 3 वर्ड्स भी लिख सकते हो और अकेला नंबर होगा भी चलेगा, तो भी चलेगा, वो तो ठीक है. लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पे एंड लिखा है इसका मतलब 3 वर्ड्स और एक नंबर अगर आपका आंसर है तो भी सही है. और अगर यहाँ पे एंड नहीं होता तो पूरा उलट पुलट हो जाता. तो उसका मतलब ये होता या तो आप 3 वर्ड्स लिखे या तो फिर एक नंबर लिखे. 2 वर्ड्स या 1 वर्ड तो ठीक है, लेकिन 3 वर्ड्स, नंबर और 3 वर्ड साथ में नहीं आ सकते. आर दिस थिंग्स क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? सबसे बड़ी बात ये पता चला आप लोगों को सबको? इज इट क्लियर? ओके, ओके, ग्रेट. So let us listen to this very carefully.
You will hear an extract from a talk given to a group who are going to stay. रीचा आवाज आ रही है ना? Yeah, is the voice audible? I just played a script. Okay. In the UK. Good evening and welcome to the British Council. My name is John Parker and I've been asked to talk to you briefly about certain aspects of life in the UK before you actually go there. So I'm going to talk first about the best ways of making social contacts there. Now, you might be wondering why it should be necessary. After all, we meet people all the time. But when you're living in a foreign country, it can be more difficult, not just because of the language, but because customs may be different. If you're going to work in the UK, you will probably be living in private accommodation, so it won't be quite so easy to meet people. But there are still things that you can do to help yourself. First of all, you can get involved in activities in your local community, join a group of some kind. For example, you'll probably find that there are theatre groups who might be looking for actors, set designers, and so on. Or if you play an instrument, you could join music groups in your area. Or if you like the idea of finding out about local history, there'll be a group for that too. These are just examples. And the best place to get information about things like this are either the town hall or the public library. Libraries in the UK perform quite a broad range of functions nowadays. They're not just confined to lending books, although that's their main role, of course. Yes, I'm sure, you people might be confused in 11th and 12th. So what is the answer, everybody? Yes, I hope. Okay, what is the answer of 11th, 12th, 13th, 14th? सिर्फ आपको आंसर लिखने हैं. And okay, so let me play this once again. मुझे लग रहा है काफी लोगों के आंसर्स गलत भी आ रहे हैं. So let me play this once again. 2 मिनट लगेंगे. You will hear an extract from a talk given to a group who are going to stay in the UK. Good evening and welcome to the British Council. My name is John Parker and I've been asked to talk to you briefly about certain aspects of life in the UK before you actually go there. So I'm going to talk first about the best ways of making social contacts there. Now, you might be wondering why it should be necessary. After all, we meet people all the time. But when you're living in a foreign country, it can be more difficult, not just because of the language, but because customs may be different. It may be more difficult not because of language, but because of customs. दो चीजें ऐसी है जिससे आपका कांटेक्ट डिफिकल्ट हो जाता है. तो पहली है लैंग्वेज और दूसरा है कस्टम्स. सो 11th का आंसर है लैंग्वेज और 12th का आंसर है कस्टम्स. If you're going to work in the UK, you will probably be living in private accommodation, so it won't be quite so easy to meet people. But there are still things that you can do to help yourself. First of all, you can get involved in activities in your local community, join a group of some kind. For example, you'll probably find that there are theatre groups who might be looking for actors, set designers, and so on. Or if you play an instrument, you could join music group. So 13th is going to be music group. या तो फिर म्यूजिक. आपको ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं, म्यूजिक ही लिखोगे तो चलेगा. In your area. Or if you like the idea of finding out about local history, there'll be a group for that too. So the 14th answer is going to be local history. Okay. These are just examples. And the best place to get information about things like this are either the town hall or the public library. So answer of 15 and 16 is going to be town hall and public library. Is it clear, everybody? So this is how it works. ये रहे आपके answers. और जो last में करवाने वाला हूँ, you can see the answers over here in either order. कोई भी order में होगा तो चलेगा. Now this is going to be the best one. Let us see how you people do it. Last करते हैं. It is what we call a sentence completion. Are you all people ready to do it? Yes or no? Is it fine if I go ahead with this? अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है ना? Okay, let us go ahead. The other thing I wanted to ask you was, did you find it hard studying with the Open University? Okay, now this is what we call as sentence completion. So sentence completion में again instructions पढ़ना जरूरी, write no more than 2 words for each answer.
और सारे ऑप्शंस देखिए आप. स्टडिंग विद द ओपन यूनिवर्सिटी डिमांडेड अ ग्रेट डील ऑफ डैश. Studying and working at the same time improved Raquel's XYZ skills. It was helpful that the course was structured in dash and she enjoyed meeting other students at. Please make sure that you should have read all this stuff, before you actually start listening. Okay. मैं इसमें वापस रिपीट नहीं करने वाला हूं. मैं चाहूंगा सारे लोग इसका आंसर एक ही बार सुन के करें. You mean because you're studying on your own most of the time? Well, it took me a while to get used to it. I found I needed to maintain a high level of motivation because... क्या आंसर आएगा 27th का? What is the answer of 27th? उसने बोला yes everybody. What is the answer? High level of motivation. अगर आपने ठीक से सुना होगा तो उसने वैसा बोला कि this requires high level of motivation. So 27th अगर यहाँ पे आप देखोगे कि great deal of है तो great deal के बदले उसने ऐसा बोला high level of और बाद में आएगा motivation. चलिए आगे बढ़ते हैं. Because it's so different from school. There's no one saying, why haven't you written your assignment yet? And that sort of thing. Oh dear. You'll learn it, Paul. Another thing was that I got very good at time management because I had to fit time for studying around a full-time job. Well, I became very good at क्या आएगा आंसर? टाइम मैनेजमेंट. I became very good at time management because आपको पढ़ना और साथ में काम करना दोनों करना पड़ता था तो उसमें उसकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स काफी हद तक बढ़ गई. सो आंसर ऑफ 28 इज गोइंग टू बी टाइम मैनेजमेंट. I'm hoping to change to working part-time, so that'll help. What makes it easier is that the degree is made up of modules, so you can take time off between them if you need to. It isn't... क्या आंसर आएगा 29th? आंसर इज गोइंग टू बी एवरीबॉडी. डिग्री इज मेड इन मॉड्यूल्स. याद रहे यहाँ पे प्लूरल्स बहुत जरूरी है. मॉड्यूल्स. मॉड्यूल अकेला होगा तो नहीं चलेगा. आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर. सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी मॉड्यूल्स. मेक श्योर दैट इट इज प्लूरल क्योंकि मॉड्यूल्स में ही तो बना होता है. ओके, लास्ट वन. Like a traditional 3 or 4 year course where you've got to do the whole thing of it in one go. Oh, that's good, because I'd like to spend 6 months traveling next year. It's all right for some. Then, even though you're mostly studying at home, remember you've got tutors to help you. And from time to time, there are summer schools. They usually last a week. They're great because you meet all the other people struggling with the same things as you. Oh. I've made some... Yes. क्या आंसर आएगा? Summer schools. Very good. So answer is going to be summer schools. Understood everybody? Yes. Have you understood? You can always take the recording of this session tomorrow or day after tomorrow so that you can at least practice it once again. Okay. So ये रहे उसके answers. For example, ये है उसके answers. पहला है 27th motivation, 28th is time management. क्योंकि दो words आप लिख सकते हो. यहाँ पे एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा कि दो वर्ड्स जो है उसलिए आप टाइम और मैनेजमेंट में देखो बीच में स्लैश जो है वो स्लैश नहीं डैश जो है वो ब्रैकेट में किया हुआ है. सो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट कंपलसरी. लेकिन अगर आपको ऐसा ही कहा होता कि वन वर्ड तो आपको डैश करना ही पड़ता तभी जाके टाइम मैनेजमेंट एक होता. तो वो चीज का जरा ध्यान रखें. 29 is modules and 30 is summer schools. Okay. The last one, which is going to be one of the most, interesting one. बहुत अच्छा है. मैं चाहूंगा ये चीज आप पढ़े और इसको बताएं ये क्या है. What is this? First of all, बहुत अच्छा है. You are going to definitely enjoy this. Let me read it out for you. इसको हम कहेंगे मैचिंग कहेंगे. You can see there are 3 options given: A, B, and C, and there are 5 courses: 21, 22, 23, 24 and 25. तो जैक है अपने ट्यूटर के. जैक टेल हिज ट्यूटर अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑप्शंस. वो ट्यूटर को बता रहा है कि ये मीडिया स्टडीज करेगा या नहीं करेगा उसको पता नहीं, या तो फिर नहीं ही करेगा. अगर आपको लगता है कि ये मीडिया स्टडीज जैक जो है वो डेफिनेटली करेगा तो आप ए ऑप्शन दीजिए. शायद कर सकता है, शायद नहीं कर सकता तो बी ऑप्शन दीजिए, और वो बिल्कुल ही नहीं करेगा तो आप सी ऑप्शन दीजिए. So let us try to listen to this very interesting one. Let me see how you people fare in this. You will hear a communication studies student talking to his tutor about optional courses for the next semester. आवाज आ रही है? Are you able to listen to the voice, everybody? Okay. Come in.
Oh, hello, Jack. Have a seat. Right. You said you wanted to see me to talk about your options next semester? That's right. We have to decide by the end of next week. Really, I'd like to do all 5 options, but we have to choose 2, don't we? Yes, but the choice depends on your major to some extent. You're majoring in communication studies, aren't you? That's right. So, for example, the media studies option will cover quite a lot of the same area you did in the core module on mass communications this semester, the development of the media through the last 2 centuries in relation to political and social issues. Well, that was interesting, but I've decided I'd rather do something completely new. There's a women's studies option. तो क्या आएगा आंसर 21st का? What answer is going to be coming of 21st? A, B or C? Everybody, I want answers from everybody. Answer is going to be C, क्योंकि उसने ऐसा कहा कि मैंने एक्चुअली ये पढ़ाई हुआ है, so I would rather do something else. मैं कुछ और करूंगा, तो ये मीडिया स्टडीज तो वो नहीं करेगा. So answer 21 का होगा C. Okay. Isn't there? Yes, women and power. Again, it has a historical focus. It aims to contextualize women's studies by looking at the legal and social situation in the 19th and early 20th centuries. So it would be useful if I intended to specialize in women's studies, but I'm not sure I do actually. Well, it might still be useful to give you an idea of the issues involved. It's taught by Dr. Steed. Oh, really? I'll sign up for that then. Yeah, 22nd. What is the answer of 22nd? वो करेगा या नहीं करेगा? Is he going to go for this or not? Okay, उसने ऐसा बताया कि पहले वो क्लियर नहीं था. पहले he was not sure whether he is going to go for it or not. लेकिन ट्यूटर ने बताया कि ये प्रोफेसर जो जिनका नाम बताया वो प्रोफेसर लेने वाला है, तो उसने ऐसा बताया अगर अच्छा ऐसी बात है तो बेहतर है मैं इसको साइन करूंगा, तो इसी का आंसर 22nd का आंसर होगा ए. अंडरस्टूड? ओके. What about the option on culture and society? That addresses the historical debate on the place of culture since the Industrial Revolution in Britain. So a historical focus again. Do I get the message you're not so keen on history? Well, it's just that we seem to have done quite a lot this semester. Anyway, I'll think about that one. If you're interested... क्या आंसर आएगा, ए, बी या सी? उसने मना भी नहीं किया है और उसने ऐसा भी नहीं कहा है कि मैं नहीं करूंगा, उसने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं करूंगा, उसने ऐसा बोला कि मैं इस पे थिंक करूंगा. तो इसका मतलब थिंक करूंगा, इसका मतलब आंसर इज गोइंग टू बी बी. बी आंसर आएगा, ही मे और मे नॉट डू इट. अंडरस्टूड? चलिए. In a course focusing on current issues, there's the option on identity and popular culture that approaches the subject through things like contemporary film, adverts, soap operas, and so on. That sounds interesting. Can you tell me who runs it? Well, it's normally Dr. Stevens, but he's on sabbatical next semester, so I'm not sure who will be running it. It should be decided by next week, though. Right. Well, I might wait until then to decide. क्या आंसर आएगा? ओके. नाउ कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सबाटिकल? सबाटिकल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सबाटिकल? उसने ऐसा बोला कि कौन रन करता है इसको, तो जवाब ये मिलता है कि डॉक्टर स्टीवंस रन करते हैं उसको, लेकिन राइट नाउ इज ऑन सबाटिकल. सबाटिकल मतलब टेम्पररी ब्रेक. जब अगर मैं पढ़ाता हूँ IELTS और इफ आई एम टेकिंग अ सबाटिकल, दैट मींस आई एम टेकिंग अ टेम्पररी ब्रेक. इट्स नॉट अ परमानेंट रिटायरमेंट, इट्स अ टेम्पररी ब्रेक. उसी का ये सुनते उसने ऐसा बोला, अच्छा ऐसा है तो मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा. तो इसी के कारण इसका आंसर होगा बी. बी इज द राइट आंसर ऑफ 24th. लास्ट वन इज लेफ्ट. And the last option is Introduction to Cultural Theory, isn't it? I'm quite interested in that too. I was talking to one of the second-year students, and she said it was really useful. It made a lot of things fall into place. Yes, but in fact, in your major, you'll have covered a lot of that already in Communications 102. So that might be less useful than some of the others. Oh, I'll forget about that one then. Now, क्या आंसर आएगा? आई विल फॉरगेट अबाउट दैट वन. इसको पहले इसने ऐसा सोचा कि मैं लूंगा इसको, आई एम गोइंग टू टेक दिस, लेकिन उसके ट्यूटर ने ऐसा बताया कि ये जो आप है वो ऑलरेडी कवर कर पाओगे और इसको लेने का कोई फायदा नहीं है. तो इसका मतलब उसने ऐसा बोला कि ठीक है तो मैं इसको साइन नहीं करूंगा.
So therefore the answer is going to be C. So this is how ये जो है उसको हम कहेंगे matching example. ये रहे उसके answers. These are the answers. So I don't know how many of you got all right. 21 is C, 22nd is A, 23rd, 24th are both B, and 25 is C. Okay. Any questions, any doubts? So this is it. I just wanted to take this. I hope you enjoyed the session, students. Did you enjoy the session? Okay, great. Thank you so much. So, let us discontinue now. Yeah, weekend question paper के लिए हाँ ठीक है चलिए. So we will have a doubt session. Okay, Pankaj, we'll think on that. Let me see. Okay, we'll be taking this recording. Yeah, you will be getting the recording of this session if you want. Thank you so much, students. Thank you for being here. I hope you enjoyed the session. एक बार जो हमने किया उसका वापस रिवीजन करना तो बहुत मजा आएगा. Okay, thank you so much, students. Thank you.